We are here for episode number two. Episode first was all about health and how health affects you and your career as a freelancer. This episode is kind of a topical episode, we would say, Yeah. because New Year is approaching and we wanted to talk about New Year, especially as freelancers, and how 2023 was for us as freelancers. Personally, I jumped into freelancing like in August, so like I have a lot of experience to share. Shrishti also, might have a lot of experiences as she started before me. So, like, Shrishti, how was your 2023 as a freelancer? हाँ वैसे इससे पहले वेलकम चेल्सी वेलकम एवरीवन टू अवर सेकंड एपिसोड and I'm so glad that episode second is happening and we have not just stopped at pilot episode and episode 1 because that was a high chance. Anyway, दिसंबर में चेल्सी जैसा कि आप मेरे पोस्ट देख भी रहे होगे एंड एवरीवन एल्स हु इज सीइंग तो दिसंबर में मैंने केवल रिव्यू किया है अपना और कुछ नहीं किया है लिंक्डइन पे ना तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात की है ना तो मैं जो करती हूँ मैंने उसके बारे में बात की है तो मैंने लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बना दिया है चाहे जो भी किसी को कुछ कहना हो मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है मैंने बना दिया है अपना लिंक्डइन इंस्टाग्राम ठीक है तो I think we all गिल्टी agree. गिल्टी तो ठीक है अच्छी बात है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा बाकी 2023 and I'll take this moment to showcase you what I have done today. ठीक है तो if you can see you guys can't see this but if you go to YouTube and our episode will be live after we are done with this so you'll be able to see us as well. So जैसा कि आप देख पा रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है 2024 year planning तो मेरा शुरू हो चुका है almost and I'm a very journal planning kind of person pen and paper तो मैंने आज पूरे दिन बस ये किया है कि मेरा 2023 में क्या हुआ and everything. And this was not planned, Chelsea. Just to let you know, मैंने ये specifically इस episode के लिए नहीं किया because we decided कि हम इसे low effort रखने वाले हैं. But it just happened so कि अच्छा आज मैंने अपना पूरा ईयर अपना रिव्यू किया है क्या कब हुआ किस महीने में मुझे क्लाइंट्स मिले किस महीने में मैंने रोया है किस महीने मेरी क्या कमाई हुई है सब चीजें मैंने करी है तो ये सब चीजें हुई हैं काफी आज बैठ के मैंने मनन मंथन किया है लेकिन एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने लिंक्डइन पोस्ट करने से छोड़ दिया तो या मतलब you guys know everything by this time so that's something and how मतलब एक साल एक वर्ड में अगर मैं 2023 को समराइज करना चाहूँ तो शायद नहीं कर पाऊंगी बिकॉज apparently मुझे इतनी पोस्ट लग गई है उसे समराइज करने के लिए why do I keep self attacking myself like it's what am I doing anyway so हाँ मतलब अच्छा रहा 2023 मतलब पूरा भी था मतलब ठीक था सारे सालों जैसे ही था बट हाँ एक चीज which I will take this moment to say कि ग्रोथ देखो हर साल होती है और मतलब हर पर्सन के ग्रो करने का एक पेस अलग होता है और मतलब वैसे ही होता है ना तो मेरा पेस टचवुड हमेशा से it has been very fast like I am a fast learner and I grow a lot throughout phases because not bragging but yeah ठीक है मैं हूँ talented मैं क्या करूँ तो फिर ये वाली चीज है बट या तो लेकिन इस साल जो ग्रोथ हुई है ना that has been magnanimous in many ways क्योंकि इस साल मैंने अपने आप को शायद सबसे ज्यादा पुश किया है अपने आप को कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा बाहर पुश किया है इस वजह से शायद या सो 2023 को अगर मैं कहूँ तो ग्रोथ would be the word that signifies 2023 for me
Wow. And how has it been for you, Chelsea? I think I relate to a lot of things that you mentioned, magnanimous growth. I guess I relate to it a little bit. Also, just, there are a lot of relatable things between us, but now I've realized, over the time we have spent together in those podcasts and even the introductory call we had. So, like, there are a lot of relatable things, but personally, I would say 2023 has been an year where I've executed a lot. Rather than just planning, I have been focused on execution a lot. Even if it was, instant, any instant decision that I had to take, any bold step that I had to take, or any hobby that I had to pick up, any client I had to pick up, everything was just, very instant. Even though regardless of it turned out great or not, I moved. I decided to move, which was a very quick decision, like very instant decision. And I moved back home again. That was another instant decision. I quit my job. That was another instant decision. So, like, a lot of things have happened. But in terms of execution, this year has been like a great year. So, I think 2023 has made me realize that execution has to be a major part when you're planning your life, or even when you're planning your month, or even you're planning your career. Anything you're planning, I think execution plays a bigger part. And I think I'm grateful for the execution that I did in 2023. So, yeah, I guess execution, I would say execution and growth is like two words for 2023 that I have. uh, so, talking about, the whole year, like, if you had to pick your best month, which one it would be? Hmm. Wow. I did not expect that that question, to be honest. It was Because instant. it was instant. But see, monetarily अगर देखा जाए ना तो September was the best. Like September was the month when things started changing for me. Freelancing maybe. Like I don't know किस किस को ये बात पता है, बट आई अगर अभी तक पोस्ट नहीं पड़ी है तो मैं 15 बार तो ये मेंशन कर चुकी हूँ, बट मैंने जनवरी में स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग फुल टाइम. बट मुझे सितंबर तक लग गया वो सब चीजें समझने में, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में, क्लाइंट्स ढूंढने में एंड एवरीथिंग. एंड to be honest, I was about to give up when things started changing for me. So September was the month that took a turn for me. In terms of finances also, I also became a bit, relaxed and laid back uh, about where am I going with whole freelancing thing. And मतलब पैसे के साथ यार वो आती है, जिसे कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता वाली चीज. इट्स नॉट ट्रू आई फील. जो भी ये बोल रहा है उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है. मतलब it reassures you in endless ways. Like this might be a topic of therapy. बट मुझे ऐसा काफी लगा कि अच्छा इट रीअश्योर्ड मी ऑफ माई सेल्फ वर्थ समवेयर. बिकॉज मतलब आई वाज लुकिंग फॉर, ऐसा नहीं था कि आई वाज एक्टिवली लुकिंग फॉर क्लाइंट्स सिंस वेरी बिगनिंग. मुझे पहले समझने में टाइम लगा अच्छा क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं. फिर बाद में पता लगा कि अच्छा आईसीपी नाम की भी कोई चीज होती है जिसमें कि आपको आपके आइडियल क्लाइंट्स क्या है वो आपको देखने पड़ते हैं. ऐसा नहीं कि आप किसी भी रैंडम पर्सन को अप्रोच कर दो. शायद मुझे वो पता था लेकिन डेमोग्राफिक वे में मुझे वो डिफरेंस नहीं पता था. तो फिर मैंने उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा चेंज किया, उस हिसाब से टारगेटिंग शुरू की. और सब लोग बोलते कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करो, ये करो वो करो. सब ट्राई करके मैंने देखा लेकिन डिड इट ब्रिंग मी रिजल्ट्स? मे बी नॉट सो मच. मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि शायद हर किसी के लिए रिजल्ट्स आते नहीं आते. इट्स सब्जेक्टिव आई फील. मेरे लिए नहीं है क्योंकि आई एम समवन हु कांट लाई.
आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट आई एम ऑफरिंग. मैं बड़ा चढ़ा के किसी को कुछ चीज बेच नहीं सकती हूँ. सेकेंडली, आई एम वेरी आई ओवर थिंक अ लॉट. तो अगर मैं किसी को अप्रोच कर रही हूँ, तो मुझे अप्रोच करने से पहले मैं 10 बार सोचती थी कि करूँ ना करूँ, उसको कैसे लगेगा सामने वाले को. तो ये गेम जो है ना, वो थोड़ा उन लोगों के लिए ज्यादा है जो सोचते ज्यादा नहीं है, जो बस कर देते हैं वाली चीज. Makes sense. हाँ, और उनको इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा सामने वाला क्या बोल रहा है. मतलब गाली दे रहा है तो गाली देके चला जाए, भाड़ में जाए, वो वाली चीज. तो बट आई डिडंट हैव अ थिक स्किन. तो काफी रिजेक्शंस. मतलब आई स्टार्टेड cold prospecting since July. I was doing it since July. जुलाई गया, अगस्त गया. तो अगस्त के एंड तक ना आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि मेरे में कुछ गलती है. लाइक मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ लेके बैठती हूँ. हर दिन किसी ना किसी हर हफ्ते मेरी कॉल्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है. व्हाई एम आई नॉट एबल टू क्रैक इट वाज माय क्वेश्चन. तो फिर आई वाज अबाउट टू यार, मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद यहाँ पे कुछ नहीं होने. अ, तो वही चीज है. बट सितंबर changed the things for me this year. Wow, that's crazy. वो था in September में. I didn't just get one client. Okay, I got one high ticket client. I got another client which is an international one. I got one more client which is an international client. तो मतलब कि वो वहां से ना एकदम से काया पलट टाइप्स की चीज हो गई मेरे साथ. तो वो मंथ मैं कहूँगी. What was it for you? Like what month? Oh, yeah, so it's a hard question. I did not think of it before asking you. Now I am stuck with this question. But when I go back, when I think about it now, I think August and December, these two were the months which were unlike in terms of getting leads, in terms of getting business, in terms of everything in freelancing. So let's say I quit my job in June. I took a break in July. I was figuring out what I would do, and I decided that I will start pitching or whatever, get clients from 1st August, right? For that, in July, I had like a few people reach out to me for some projects or some full time offers as well. As soon as it was August 1, I had referrals, like a lot of referrals, like instantly. I don't know how it happened, but August 1, referrals, 3, 4 referrals I got. I started working with 2 people instantly, and then another person was in like talks. We started working, but that did not work out in the end. Doesn't matter. But what I'm trying to say here is August was like magical. It was like things were coming to me. And December again. In December, my birthday was on 18th this month. As soon as I turned 24, the magic happened again, kind of. I do not believe in manifestation or these kind of things majorly, but what happened is kind of magical, I would say. As soon as I turned 24, I had leads coming in, I had referrals coming in. It's another question that if I have still closed them or not. I'm still in talks with a few, but again, it's like it happened. It just happened. So I would say August and December were great, but if I had to pick one, I would say it was, I don't know. It's a tough question. I cannot pick one because August was good in terms because I started doing something. I started making money after I quit my job. December was like I got more confidence that what I'm doing and what I have been doing is going great until now. So it's like December gave me that boost to keep doing this, to continue this journey, and August was a boost that I should do this. So like August and December were like the nicest months for me if I look back. Yeah, interesting flashbacks. Yeah. That's crazy. So coming back to this present moment, I think a lot of things have happened in 2020, 2023,
and a lot of things will happen in 2024 as well. But do you have any goals? Have you created any resolutions for 2024? Hmm, See, honestly, I have not, like I'm being honest right now, I have not created any resolution, any goals for 2024 abhi se. Um, and that I just showed you my journal. तो उसमें वो बस लिखा हुआ है, उसके आगे का नहीं किया मैंने आज I'm केवल wishing for एनालाइज you. किया है 2023 को. बट अगर if I had to pick one or two common themes between uh, if I had to learn from the past year and think about my goals. जैसे अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन अगर मैं लिखने बैठती हूँ अभी, तो मेरे दिमाग में 3-4 चीजें तो आएंगी जिस पे मुझे काम करना है 2024 में. एंड it's it's not distantly related to my career right now. The first and foremost thing that I want to work on is my health and my lifestyle. That's like the number one thing that I want to work on. Okay. And like मतलब कि इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी शायद डिस्कस किया था कि यार हेल्थ का ना बहुत बैंड बजी हुई है अभी. तो ये वाला सीन हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हेल्थ और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना है. एंड या आई थिंक दैट की माय की गोल एरियाज. एंड मतलब लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल का मतलब वो नहीं होता कि अच्छा आप कसरत करना शुरू हो जाओ, योगा करना शुरू हो जाओ और बाहर का खाना बंद कर दो. नॉट एसेंशियली दैट. बाहर का खाना बंद करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए. बट मतलब कि बट आई स्टिल वांट टू लाइफस्टाइल वाइज आई वांट, जैसे फ्रीलांसिंग में अभी लास्ट टाइम आल्सो वी डिस्कस कि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन टाइप की चीज हो गई. आई वांट टू बिल्ड सम डिसिप्लिन अराउंड माय लाइफ इन 2024. मुझे पता है कि अभी मैं freelancing gives me that comfort and freedom to work from my home and from wherever I want to in the entire world. But I would still, want to bring in some kind of discipline in my life and streamline all of the things that I have to do. Um, I think 2024, I also want to focus on a lot of like अगर career के बारे में बात करें तो I want to focus a lot on, like I have been thinking about it, but I want to focus a bit on the creator economy aspect of myself is what I have in mind right now. Not a lot of people know from the crowd and on LinkedIn also. They don't know. मतलब उन्हें लगता है कि अच्छा she's a LinkedIn marketer and what not. But guys, I have been on YouTube before. I was a YouTuber in 2018. I literally have my own channel. I was an artist before everything, and I haven't been in touch with that persona since a long, long time. People still ask me कि Instagram पे नहीं है, क्यों नहीं चलाती है, this and that. I have no answer to them. मतलब मैं अभी बोल रही हूँ ऐसा, लेकिन मैंने कल ही अनइंस्टॉल किया है मेरे से Instagram, तो वो वाली चीज तो है. मुझे नहीं पता कि when will I come to peace, come into terms with my alter ego. कुछ कुछ तो वो थेरेपी वाली वो सेशंस के लिए मैं छोड़ देती हूँ. बट हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि आई वांट टू build a persona, build my own personal brand is what like मैं लोगों को तो build कर ही रही हूँ, but अगर simplistic terms में कहा जाए तो I want to get into touch with that side of me. Maybe not exactly in terms of being a creator कि अच्छा reels बना रहा है and everything, but something it hasn't it मतलब वो अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ है वो आइडिया कि क्या करना है, पर
कुछ करना है Well, Still processing. हाँ तो ये कुछ गोल्स होंगे शायद 2024 में बाकी वो बाकी यूजुअल है कि हाँ भाई आपको अपना लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ माय की गोल्स और वो तो मेरा लाइफ गोल वाली चीज है उसकी तरफ तो काम होता ही रहेगा कि आपको फाइनेंशियली जस्ट मतलब जस्ट प्लगिंग इट इन गाइस अगर आप कमाते हैं आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का अभी से नहीं सोच रहे हैं तो दिस इज योर की कि उसको गूगल करके थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट करना सेव करना इन सब चीजों के बारे में थोड़ा अब मतलब बड़े हो जाओ आई शुडंट से दिस लाइक दिस कि मैं बहुत दादी अम्मा हूँ बट थोड़ा सोचो इस बारे में This feels like a personal attack. हाँ मतलब थोड़ा सा सोचो इस बारे में कि करना क्या है आगे ठीक है मतलब केवल आपको कमाना है और उड़ाना है या फिर आगे का भी कुछ सोचा है ठीक है तो दिस इज समथिंग अच्छा ये थोड़ा सा मेरा माइंड बीच में और भी चेंज हो गया है मैंने अभी ना यू नो शरण हेगड़े राइट हाँ तो आई हैव like I was given this link from a friend of mine and he was like I have bought this master class I'm not going to attend it so if you want you can attend it so I attended this master class पूरा financial से related कुछ था and I have learned so much about so many things after that कि अभी मेरा ये अभी मेरे दिमाग में दिन रात चलता रहता है अच्छा मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है एसेट एलोकेशन कैसे करनी है दिस एंड दैट इट्स अ वेरी फैंसी वर्ल्ड आई अंडरस्टैंड बट जरूरी है तो वो एक गोल तो रहेगा आई थिंक इट्स अ लाइफ लॉन्ग गोल ऑब्वियसली बाकी यही है I also want to simultaneously focus on my social life a lot. I want to network with freelancers, people like me a lot. And not just online. Please, online मेरा हो चुका है मुझे offline मिलना है. And yeah, I want to make like build connections, meet people, और travel करना है. Like I read this post of yours that you took your first flight in 2023, na? Yeah. I haven't still taken my first flight. So 2024 goal. हाँ 24 का ये गोल है मुझे फ्लाइट में ट्रैवल करना है पहली बार तो Bucket list. ये bucket list. ये कुछ चंद चीजें हैं जो मुझे करनी है व्हाट इज योर गोल चेल्सी First things first, I am a person who doesn't set resolutions and goals. At least I think this. But unconsciously, in the back of my mind, I think I have a lot of things after you mentioned a lot of stuff, right? Uh, Meeting people, having a good social life is something that I want to try consciously. Earlier, like in 2023, it was very unconscious. Like I was very unconscious कि हाँ ठीक है इससे एक बार बात कर ली, दो बार बात कर ली, तीन बार बात कर ली, फिर बात नहीं हुई. So I think I am a person who kind of acts like a snail or let's say turtle, something like that. I don't know which animal it is, I can't recall it. So it's like it comes down once in a while and it goes to hibernate. I am that person. You will see me like interacting a lot. You will see me, being a social animal one day and then I'll disappear for days and months. This happened a lot of times. It still happens. But I think I want to try in this aspect. I want to try in this area. Like I want to be a better friend, a better mentor, whatever. Like let's say if I have a connection with someone, I want to keep it as it is, like build a good and stable connection with that person. So like I think social areas may I would say this is one thing. I want to try to maintain that relationship rather than just building relationships and disappearing for days. Right. I think it's more about ki haan theek hai,
If you are making a relationship, even if it's a friend, even if it's a partner, even if it's a teacher, if you are into that relationship, if you are thinking कि हाँ ये relationship मुझे चाहिए, तो you have to put in efforts, which I've realized over the course of 2023. तो क्या होता है कि I usually disappear. I don't know, it's my personality, it's my habit, it's my nature. I don't know what it is, but I disappear a lot. And people have complained me about it. Like the people who are like very close, they're like, or is it okay with you? All is going great or not? You went MIA. So like it kind of concerns me more than them, because मुझे लगता है कि यार अगर किसी दिन आई सीरियसली डिसअपियर तो क्या होगा, कि लोगों को तो यही लगेगा ना कि she just acts like this, she just disappears for some days and she'll be okay and she'll come back soon. So I think I want to try in that area. This thing I realized after talked about your social life. So I think there are a lot of goals in the back of my mind that I have thought of unconsciously. But I think now, if I start talking about it, I think there are a lot of things that I want to improve. When it comes to, lifestyle, I would say I want to go all in with fitness as I did in lockdown. Lockdown mein, what happened is I was like, I used to work out twice a day, which was a lot. And then I got habitual of it. And then I think I joined gym, I built muscles, all of that. It was kind of crazy. And then suddenly, pata nahi kya hua, I felt like, taking a break. And then फिर वो break के बाद I never found that momentum again. कभी या तो एनवायरनमेंट नहीं पसंद आएगा, या कभी होमवर्कआउट्स करने का मन नहीं करेगा. लाइक आई फेल्ट सो लेजी, और लेट्स से आई लॉस्ट द मोमेंटम दैट आई हैड इन लॉकडाउन. So I want to build that momentum, and I have realized that accountability plays a big role in anything that you are trying to do in your life. So I think I will take help of accountability. I'll find a partner or whatever way works, maybe a trainer, however it works. Uh, I want to give a like really good, great shot to fitness, like maybe building something out of it. It's like I am kind of experimenting with a lot of things. I think 2024 is all going to be about experimentation. I'm giving myself an year to, explore everything, to figure out what I actually want, which I still haven't figured out. I might turn writing into a side hobby rather than a main hustle. Yeah, that is one thing that I'm looking at, to make writing a side hustle rather than my major source of income. I want to try fitness. I want to give a shot at coding once again. I did coding in lockdown. I want to try it again. I don't know, like, I think lockdown gave me a lot of time to think of things and figure out what I want. So I think as I have like got old, I would say 24 feels old. So like as I've turned 24, I've realized I'm getting into that phase where I'm more concerned about figuring out stuff and exploring other things. So like there's also a fear of settling down with things, but also like I'm giving that creative freedom to myself, that if you want you can try this, but again you have to be serious about it rather than just fucking around with everything. Fucking around, figuring out stuff works, but I think I have passed that age. I have passed that phase personally. I won't say ki you cannot do anything after 24 or even after 30, but personally, depending on the energy and the bandwidth, I would say I have passed that phase. I feel like settling down. I want to try things. I want to figure out stuff. So I think 2024 is going to be all about maybe settling down a little bit than earlier in my life. Like officially 2023 was the first year of my actual career. So 2024, I don't know, I'm scared. I have a lot of things. Now I'm talking about it, it feels like I have a lot of things to do in terms of money, in terms of finance, in terms of uh,
personal life, professional life, figuring out things. And again, like it felt like it felt like personal attack when you talk about investments in finance because I haven't really took them seriously. The masterclass you were talking about now, I also took a mini webinar, I guess. Everything just went over my head, like nothing. Like, मुझे कुछ नहीं समझ आया उस time पे. And I think I haven't tried learning it. Like I haven't tried learning finance, which I should have technically learned in schools, but obvious that we did not. So yeah, I want to give it There a are try. a lot of things, Chelsea, that we should have been taught in school, but we are now figuring out ourselves. तो उसमें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी. Yeah. But yeah, just casually putting it out there that I still have some of the material with me in case you want to have a look. Like I do this with every webinar and stuff that I attend. That I take screenshots of their slides. Oh god. So I have material with me, and I can personally explain them to you. So just in case you want any help with that. I want that material. I'll DM you after this podcast Absolutely. come audio Absolutely. event. Absolutely. Yeah. Sure. So yeah, finance is something that I want to learn Yeah. more. Sure. More class. I haven't even started on that place. I guess, but yeah, like this reminds me of the fact that I think our younger generation has had better resources for that. Let's say, for example, my brother knows more about me at 18 than I knew at 18, right? I think this is something cool which has happened with our generation. They are more like they are evolving better, they are more knowledgeable than us, they have more resources, and I think they're a lot more ahead of us than we were at our age. So I think that's one good thing. But like, do you feel FOMO of all the 18-year-old creators, 18-year-old millionaires out? I'll be honest. I used. Did I? Honestly, I've never felt that. I don't. I don't know if that's because I've never been in the place of privilege. Like Hmm. uh, I've 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 come from a lower middle class background, Hmm. and the bigger problem for me was to figure out my survival. So I was never lured in by some 18-year-old accomplishing something because I was like, ठीक है भाई, लेकिन I have something else to take care of. So I think that's why I've never been affected by that. Also मैं बहुत ज़्यादा mature हो गई हूँ for some reason. मैं दादी अम्मा बन चुकी हूँ. But this is मतलब not to be sexist, but this is a thing that लड़कियां थोड़ी जल्दी सी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी mature जल्दी हो जाती हैं. That is true. That is true. That is true, and being the elder daughter thing is also one thing. Same So, here. and like, see, I had to be financially not independent, but I have to be financially fit to support my family just after I graduated. Okay, I had no this मतलब मेरे पास वो मौका तो था ही नहीं कि अच्छा आप पोस्ट ग्रेजुएट भी परस्यू करो. तो ये था कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब ही करनी है. Makes sense. या सो जब आपके पास लाइफ मौका चॉइस ही नहीं दे रही है कुछ आगे करने का, तो फिर तो यही करना है. जब आप जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मतलब आई एम यूजिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट टेक्निकली द राइट टर्म, बट हाँ आप वैसे हो जाते हो, आपके पास कुछ पैसे आने लगते हैं, आप तो ना आपका एक अलग फेज में आप चले जाते हो. तो मतलब वो सेविंग्स करना, मनी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग आई हैड टू लर्न सिंस देन. क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि अच्छा लाइक आई डोंट हैव जनरेशनल वेल्थ दैट कैन टेक केयर ऑफ मी, तो आई हैव टू बी द वन हु हैज टू बिल्ड अ जनरेशनल वेल्थ. तो मेरे साथ थोड़ा वैसा था. बट फोमो की बात करें तो यार ना ऑनेस्टली बोलूंगी मुझे ना नॉट टू
not to offend anyone, but मुझे जो Gen Z culture है ना थोड़ा सा fake लगता है. It comes from a sense of privilege, is what I feel. Uh, मतलब I don't know. I might be biased about that. And FOMO तो मुझे खैर कभी नहीं हुआ. Makes sense. मुझे चिड़न जरूर होती है but FOMO नहीं हुआ. But also like I'm very happy that people are becoming like people have access to so much of knowledge these days. And मुझे ना उसको देख के कोई जलन नहीं हुई यार कि ये हमें भी मिल जाता तो हम भी ऐसा कर लेते हैं वाली चीज. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास वो सब चीजें नहीं है जो हमने देखा है. Like we have literally seen we have seen the advent of कैसे हमारे पास पहले एक बड़ा वाला टेलीविजन होता था. ऑफलाइन हमने ऑफलाइन दुनिया देखी है जो उन्होंने शायद कभी नहीं देखी. वो उनके मतलब जन्म के साथ ही उन्होंने यही देखा है कि टेक्नोलॉजी होती है. कि हमने विदाउट टेक्नोलॉजी वाला फेज देखा है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत प्रेशियस है. तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आई एम लूजिंग आउट ऑन समथिंग. बट आई डू फील समटाइम्स दैट the upcoming generation is actually I feel, I don't know, I shouldn't say this, but I do feel pity for them sometimes. Like they have lost out on a lot of things. And I feel like loneliness is one big thing that they are facing going ahead in the future. As the technology becomes more and more apparent, वो हम लोग के साथ भी ऐसे हो रहा है कि अभी एकदम से वो लोनलीनेस वाली, मतलब आप किसी से भी पूछ लो यार, हर कोई पर्सन लोनली है. तो जब सब लोनली है तो फिर इतने सारे लोग लोनली घूम रहे हैं केवल. मतलब इसका कुछ तो वो हुआ ना, इसका कुछ तो मतलब है ना कि हम लोग एज अ ह्यूमन सोसाइटी कहीं ना कहीं कुछ लूज कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि फोमो तो मुझे नहीं होता, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट we should work, we should look into what is happening around us in that sense also. कि मतलब अच्छाई और बुराई भी की है. वो काफी प्रवचन दे दिया मैंने आज एकदम भगवान के. I hope people don't spam you with messages कि यार तुमने Gen Z को ऐसे कैसे बोल दिया. हाँ भाई कैंसिल कर दो, मुझे कैंसिल कर दो. Don't get फर्क नहीं पड़ रहा है. Don't get cancelled on LinkedIn after this podcast. अच्छा है, मतलब पता है any popularity is good popularity. मेरा तो वो मानना है. हाँ, any PR is good PR. कर दो भाई, कैंसिल कर दो मुझे. तो मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा. I saw this reel today. Like that person is Russian. She's a millionaire, and I don't know if you've heard of her or not. Neoli. She has her account by. She goes by Neoli, and she's like a Russian actress, come creator, come influencer. I would say she's running her own agency as well. She gets bashed for a Russian accent. Right? People tell her like, you have a lot of money. Why don't you spend money on English classes? Right? So like she literally put this in open, like any popularity I'm getting is good popularity. Yeah. Even if they bash me, I'm getting more followers and I'm getting more money out of that. Like, so why won't I? Tell me when I already know ना how social media works. तो मेरा तो ये कि ठीक है, अच्छी बातें करो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. Look, I stand by my opinions is what I'll say. And being a woman with an opinionated stand is very valuable, I feel. Yeah. I think one good thing here is if like in creator economy, I would say if you are true to yourself, like if you are not being fake, I think you are going to build a long-term, brand that people would remember for years. If you fake it, you'll be gone in like a year. I think that's a good learning in 2023. Yeah. Earlier, people used to do is fake things and just got a lot of followers. Yeah. This happened with shows like Spritz Villa, Big Boss, all of these. I think most of these are made up, and I've been like
Personally, people have told me who have been at such places, like this is like scripted. Most of it is scripted. Yeah. I think there's a branding lesson in here as well. Like, don't fake anything. Be yourself. If it takes you like maybe an year longer, but do it because it's going to be long term. Yeah, because मतलब cliche है, but it's said ना कि be yourself because everyone else is taken. So, Hmm. like, even if you fake someone, you're just faking someone else, and that someone else already exists. तो क्या फायदा है? Makes sense. Coming back to New Year and the whole New Year blues or New Year whatever people are feeling about it. So I think we set a lot of goals every year. Like most people set a lot of goals, including us, with certain things. I will earn this amount of money. I will gain this much of followers. I will do this. I will learn this. I will take up this. Like I don't think people achieve them. I don't think people accomplish a lot of goals. So like I don't know. I never made like goals, and I even did not focus on accomplishing things. So now I think of it, is there any way that you can set realistic goals that you actually achieve? I think it's more like a daily to-do list which you set. Let's say a to-do list is basically a to-do list is you are making for one day and you're accomplishing the tasks. New Year resolutions are like for like to-dos for your whole year. Like, is there a way that you set realistic goals and you achieve them? Has it ever happened with you that you set realistic goals and you actually achieved them rather than just setting goals out of New Year resolutions because you had to? Yeah, that's a really good question actually. Um, so I'll tell you one thing. There are some goals that I remember. So I do this every year. Okay, Hmm. I have इस तरीके जैसे I have been journaling since 20 I think 2011 or 12 I have been journaling. मेरे पास सारी डायरीज रखी हैं और ये चीज मैं हमेशा साल के स्टार्टिंग में करती हूँ. आई एम दैट पर्सन हु likes to document everything. गोल सेट करना मुझे बहुत पसंद है, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सब भी. So I don't just plan, I execute it as well. So speaking from personal experiences अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हम गलती क्या करते हैं ना, हम बहुत सारे गोल्स रख लेते हैं अपने पास. और पता है क्या, I actually this is something that I learned while I was like I consciously uh, uh, learned about this when I was designing a post of my one of my clients. So like it was his input basically, and that's what I'm reiterating right now. That what we do is we focus on our goals and the results part of it, but we do not work on the actions part of it. Is what I'm saying. Right. ठीक है, हम गोल रखते हैं कि अच्छा I want to lose 50 kgs. I don't know. Hypothetically speaking, I want to lose 50 kgs by the end of the year. ठीक है, ये आपने गोल रख लिया, बहुत अच्छी बात है. एक्शन पार्ट में आपने कुछ लिखा, उसको ब्रेक डाउन किया कि वो गोल कैसे अचीव करना है, वो तो किया नहीं. पर साल के एंड तक फिर वी रिविजिटेड, अरे 50 केजीस नहीं हुआ, तो फिर से काट दिया, यार ये तो हो ही नहीं पाया. फिर हम सोचते हैं कि हमारे कुछ नहीं. rather than that, I think the realistic goals or it should be न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है ना. तो रेजोल्यूशन का मतलब है कि आप क्या चीज करोगे डेली. तो अगर उसकी जगह पे ये होता कि हाउ वुड यू अचीव दैट गोल, उसको ब्रेक डाउन करते हैं एक गोल को लेकर कि मुझे एक साल में ये गोल अचीव करना है, तो मुझे पर मंथ क्या क्या टारगेट रखना पड़ेगा. अगर 50 केजीज है तो उसको रियलिस्टिक, चलो 60 केजीज भी पकड़ लें क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है. तो तो 12 5 से 60 होता है ना, तो 5-5 किलो मुझे हर हर मंथ आइडियली टारगेट रखना चाहिए. दिस इज व्हाट आई डू विद ऑल ऑफ माय गोल्स, कि एक बड़े गोल को ना पहले छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करो. कि आपको आइडियली आपका 1 महीने में आपको 5 किलो घटाना है, विच इज नॉट अ बिग
गोल अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 50 kg एक मंथ में घटाना बहुत डिफिकल्ट काम है, पर आप 5 kg घटा सकते हो। वो 5 किलो कैसे घटाना है ना, उसके लिए आपको क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे 1 महीने में, उसके हिसाब से आपको फिर ये बैक डेटिंग प्रोसेस है पूरा। आपको बैक डेट करना पड़ेगा कि अच्छा आपको वही चीज है, वो समझना पड़ेगा कि कैलोरी डेफिशिएट कैसे काम करता है, और क्या कहते हैं, आपको कितनी कैलोरीज दिन में कंज्यूम करनी है, कितना आपको वर्कआउट करना है, कितना आपको अपना मूवमेंट रखना है। उसी हिसाब से अगर आप दिन में अगर आई थिंक 10 to 15 मिनट्स भी अगर आप कंसिस्टेंटली डेली को कुछ एफर्ट्स करते, तो आपका एंड तक वो गोल शायद 50 नहीं हो पाता है, चलो अग्रीड, बट कहीं तो पहुंचता, 30 पहुंचता, 35 पहुंचता। दैट इज हाउ गोल्स वर्क। ऐसा नहीं होता, मतलब मोस्टली गोल्स में एक फनी इंसिडेंट भी है कि 2020 में मैंने गोल्स रखे थे कि आई वांट टू ट्रैवल एटलीस्ट 4 places दिस ईयर। और 2020 में क्या अच्छा हम लोगों के साथ मजा किया है कि हम कहीं भी ट्रैवल तो नहीं कर पाए, पर अब उसके लिए हम अपने आप को कोसने बैठ जाए कि यार हमने हमने तो 4 जगह ट्रैवल नहीं की इस साल, तो यार वो तो अब सिचुएशन थी ना, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो भी चीज है कि हमेशा आपके गोल्स रियलाइज नहीं होंगे, लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। वो वही गीता वाली लाइन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली जो चीज है कि आप केवल एक्शंस पे फोकस कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे वो, और मुझे ऐसा लगता है कि गोल सेट, फिर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि गोल सेट भी कर ही क्यों रहे हैं, कि क्यों रियलाइज तो होते नहीं है बात वाली बात। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि जब हम हाई गोल सेट करते हैं तो उसके बीच का कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। राइट। वो चीज है, अगर आप गोल सेट नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही इतनी है, फिर आप वहां कहाँ पहुंचोगे। तो हाई गोल सेट करो, आप उसके बीच में कहीं ना कहीं पहुंचोगे। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल गोल सेटिंग थिंग। मेक सेंस। यही है। और थोड़ा सा वैसे भी हो गया, लाइक अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे आई एम डूइंग योगा एवरी डे। अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, आई यूज्ड टू डू योगा, आई यूज्ड टू वॉक एवरी डे, बट मैं ना बार बार हर दिन आके वेट चेक कर रही थी, मेरा वेट कम हुआ कि नहीं, मेरा वेट कम हुआ, और डेली किसी का वेट कम नहीं होता भाई। और तो फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाती थी कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं अभी इतने दिनों से योगा कर रही हूँ, मैंने सोचना भी छोड़ दिया कि मेरे को वेट चेक करना है। मैं वो योगा करने के एक्शन में ही संतुष्टि देख रही हूँ अपनी, कि जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग द एक्शन, यही मेरा रिजल्ट है, इसी से मुझे खुशी मिल रही है। मुझे वो रिजल्ट तक जाना ही नहीं है कि अच्छा वो कुछ नंबर्स में मुझे चेंज दिखे या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज जब मैं वो एक्शन कर रही हूँ ना, जब योगा का जो एक्चुअली येस्टरडे आई डिड hatha योगा, तो योगा का भी मैं डेली डेली कुछ वेरिएशन करती हूँ, एंड इट वाज सो डिफिकल्ट मैन। You had to hold poses, उसमें heavy breathing, एकदम मुझे हाफने वाली चीज हो जाती है ना, वो वाली चीज हो रही थी, but it was so calming and so empowering for some reason। मतलब मेरे को तकलीफ हो रही है बॉडी को, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय बॉडी। आई एम श्योर यू विल रिलेट टू दिस, लाइक हिटिंग द जिम एंड दैट फीलिंग कम्स इन। तो वो प्रोसेस ही काफी है, आई डोंट वांट टू लुक एट रिजल्ट्स एनीमोर। तो आई थिंक गोल्स वैसे सेट करने चाहिए कि आप एक्शंस के गोल्स सेट करो कि आपको डेली करना क्या है। तो यही वाला मेरा पॉइंट रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? I think the biggest learning here is ki don't, be so focused on outcomes. I think you have to focus more on the journey, the process, the actions, to actually get the outcomes that you are looking for. I guess I can relate to this. I think I have never been that person who sets goals, but recently मैंने to-do list जो बनानी start करी है, I think they have been more realistic than earlier. Yeah. पहले क्या होता था, I was like, I have these 5 tasks that I have to do.
I was never able to complete them. I barely ticked off one task. So abhi what I do is I divide stuff. अभी I've been looking at it as कि हाँ अगर मुझे ये चीज करनी है तो मुझे आज एक दिन में मंडे को लेट्स से मंडे फॉर एग्जांपल कि मुझे आज मंडे को ये दो स्टेप्स करने हैं कि कल मुझे अगला स्टेप करने में वो मतलब द मोमेंटम स्टेज राइट कि अगर मुझे एक चीज करनी है उसमें 10 स्टेप लगेंगे तो आई विल डू 2 स्टेप्स ऑन मंडे एंड देन 2 स्टेप्स ऑन ट्यूसडे तो आई एम गोइंग बाय दैट लिस्ट इज कि हाँ दो दो स्टेप्स आज करना है 2 स्टेप्स कल करने हैं एंड फिर ये एक हफ्ते में हो जाएगा अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मुझे ये काम करना है आई हैव टू डू एक्स वाई जी थिंग उसको छो नहीं होता है आई थिंक रियलिस्टिक सेटिंग योर गोल्स एंड सेटिंग योर टू डू लिस्ट रियलिस्टिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग देम ऑफ क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा अगर तुम्हें एक्स वाई जी चीज करनी है तो उसके एक्शन आइटम्स लिख लो 5 है 10 है एंड उनको टाइम के हिसाब से लाइक ये चीज आई यूजुअली डू ये चीज कहाँ से आई व्हेन व्हेन आई यूज्ड टू वर्क विद क्लाइंट्स ना हम क्लाइंट्स के रिलेटेड में बोलते हैं कि रिमूव द फ्रिक्शन मतलब रिड्यूस द फ्रिक्शन एज मच एज पॉसिबल राइट कि मीटिंग्स खुद शेड्यूल करो उनको टाइम स्लॉट दो rather than asking them for time slot you know sending them invoice and reminding them and whatever things like उनके लिए रिड्यूस कर दो फ्रिक्शन जीरो कर दो वही गोल सेटिंग में भी इट्स द सेम थिंग खुद के लिए फ्रिक्शन जीरो कर दो रिमूव एज मच एज वेरिएबल्स एज यू कैन अब लिंक्डइन में भी क्या करते हैं हम कि जितने वेरिएबल्स रिमूव कर सकते हैं उतने करते हैं लेट्स से टाइमिंग वाला वेरिएबल हमने रिमूव कर दिया वी हैव फिक्स कि हाँ, हमें 12 बजे पोस्ट करनी है हम 12 बजे करेंगे हमें एंगेजमेंट करनी है हमने 30 मिनट ब्लॉक कर दिए एंड हमारी पोस्ट के कैलेंडर रेडी है कि हमें ये पोस्ट इस दिन पोस्ट करनी है राइट तो वो चीज हमने सारा फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया सारा वेरिएबल्स हटा दिए आई थिंक दैट हेल्प्स इन रियलिस्टिक गोल सेटिंग a lot of things are like very similar when it comes to a lot of things अब जैसे लिंक्डइन वाली एनालॉजी also relates to न्यू ईयर गोल्स तो न्यू ईयर गोल्स अगर तुम्हें लेट्स से तुम्हें फिट होना है एंड तुम्हें मसल्स बनाने हैं लेट्स से तुम्हें 10 किलो भी लूज करना है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स तो उसको ये मत लिखो कि आई हैव टू लूज 10 kgs अगेन रिपीटिंग योर पॉइंट उसको ब्रेक डाउन करो कि मुझे 10 किलो लूज करने के लिए हेल्दी खाना पड़ेगा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली और 3 महीने में मुझे लेट्स से 3 किलो वेट लूज करना है विच इज लाइक वेरी सुपर इजी 3 केजेस इन अ मंथ इज नॉट अ बिग डील you can achieve it by like normal walking sessions and even eating well so like उसको ब्रेक डाउन कर दो उसको ऐसे गोल में लेके आओ कि मुझे एक हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार वर्कआउट करना है दैट इज योर रियलिस्टिक गोल मुझे एक हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन क्लीन खाना है चलो ठीक है एक दिन तुमने चीट डे भी ले लिया कोई दिक्कत नहीं है बट इट्स लाइक कि उसको जितना ज्यादा वेरिएबल्स हटा सको हटा दो तुम डिसाइड करके रखो कि मुझे 7 बजे जिम जाना है सुबह 7 बजे जिम जाना है तो तुम रात को अपने आउटफिट्स डिसाइड करके रखो सुबह रात को ही अपना प्री वर्कआउट अगर तुम एप्पल खा रहे हो तुम कॉफी पी रहे हो सब कुछ अपने पास लेके रखो दिस इज आई थिंक व्हाट रियलिस्टिक गोल सेटिंग इज अगर मुझे कल सुबह 7 बजे जिम जाना है तो व्हाट आई वुड डू इज रात को अपनी कॉफी किचन के मतलब यू नो स्लैब पे आई विल कीप इट कि मेरे सामने मुझे सुबह ऐसे ना हो कि यार यार ऐसे हो रहा है कॉफी नहीं बनाई है अभी तक कपड़े नहीं सोचे हैं छोड़ नहीं जाना तो वेरिएबल्स रिमूव कर दो आउटफिट अपना डिसाइड करके सो जाओ तुम्हें अगर ज्यादा ही है कॉफी भी तुम गर्म पानी अपना करके रखो बॉटल में एंड कॉफी साथ में रख लो सुबह बनाई एंड यू नो जस्ट गो so like I think remove as many variables as you can and I think it will become easier for you to achieve your goals. I think this is what I'm looking to do this year, this upcoming year. Yeah. And मतलब काफी लेट हो गया I'm अभी just trying to take a long, deep breath. I got tired of speaking. Wow. I can't hear you. You are on mute. Yeah, And then, yeah. I just unmuted me. Yeah.
That's realistic speaking, I would say. ठीक है यार. ऐसे भी it's been an hour since we have been speaking Oh continuously. God. Yeah. I think we have covered a lot of things that we wanted to talk about. So Yes, that's true. Do you want to I, take do you want to take upon any audience questions or something? if anyone has, I don't think so. It was like more like a candid conversation. Seven people are still listening. If you have any questions, you can raise your hands. We'll be happy to take any. Or if you want to speak about something as well, मतलब Yeah. if you want to add something to our Hmm. conversation. क्या सब लोग ऐसे ही सुन रहे हो क्या यार? मतलब अलग टैब में खोल लिया और बस सुन रहे हो? Who are when we you? had our when we did our first, I don't know, pilot or first episode, some one friend told me this, like they were doing their chores and they were listening to like a podcast, like side में. हाँ So तो like I think our conversations can be this way, कि हाँ लोग side में कुछ भी काम कर रहे हैं and they listen to us like या talking. मुझे भी यही लग रहा है बिल्कुल. सारे लोग अभी दूसरी टैब में खुल के बस सुन रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ. Hmm. अच्छी बात है यार, लगे रहो. मतलब मल्टीटास्किंग चल रही है अच्छी बात. Okay. But yeah, like so yeah, everyone is reacting. So active है लोग active है. ऐसा नहीं है. Reacting, they're reacting. हाँ. I think reacts are good enough engagement for us, at least for now. Yeah. हाँ मतलब I think we did a lot better than the previous episode है ना, and way better than the pilot episode. तो हम लोग भी Yeah. improve कर रहे हैं हर पॉडकास्ट पे. हमारा गोल हमने तो गोल ही नहीं रखा पॉडकास्ट का, एडिंग ऑन टू योर गोल सेटिंग वाला चीज. जस्ट सो यू नो वी हैवंट केप्ट एनी गोल कि इतने लोग आएंगे, इतने इतनी इतनी एंगेजमेंट हमको चाहिए, इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए. हमने कुछ ही नहीं रखा है. पहले कि हाँ हम कर रहे हैं, हमें आपस में बात करनी है एंड लाइक वी जस्ट वांट टू टॉक इज व्हाट इज इट इज बेसिकली. I think for the next 3 or 6 months, I think we are not setting any goals. Yeah. At least I think that. Uh, I think talking and getting more clarity on our thoughts is the best goal here for now. Yeah. बाकी ऑडियंस का क्या है, एंगेजमेंट का क्या है, थोड़े टाइम में सोचेंगे. बट या अभी के लिए वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन गेटिंग क्लैरिटी ऑन आवर थॉट्स. आई थिंक That is this is the goal that I have with this podcast for now. same. Like with me, I just thoroughly enjoyed our conversation today because Candid. it was candid. It was more candid than the previous one for sure. And I enjoyed it. Yeah, मुझे मजा आया. The questions also were very अच्छा सोचने पे मजबूर आपको करते वैसे वाली चीजें थी. तो I don't know why do I come up with such questions जो बाद में मुझे ही प्रॉब्लम देते हैं, कि हाँ दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है. बट या आई थिंक इट वाज गुड. yeah. So we have done a podcast like today. Next अब तो हम अगले साल मिलेंगे सब लोग. Oh God, I remember this. I had to Please make कैसे this joke. God, अब तो एक साल बाद मिलेंगे हम लोग. अब तो तू एक साल बाद वॉशरूम जाएगा. एक साल बाद remember these things. अब तो एक साल बाद नहाएगा, stuff like that. Oh God. तो हम एक साल बाद मिलेंगे. तो बढ़िया यार. आई थिंक द नेक्स्ट वी मीट इज ऑन अच्छा 13th को दिखाया नहीं 12th को दिखा रहा है. तो 12th जैन को we will meet most probably. 13 होते तो थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस थे. ठीक है. I think for the people still hearing us or the people who are listening us on Spotify, we are going to we are going to put this on Spotify and YouTube as well. So for the folks who are, listening to us, subscribe. Please कर दो. Tap the bell icon. Whatever you have to do with it. Actually, share people, spread it, whatever you can do with it, do it. देखो सुनो सब लोग, लिंक्डइन पे अगर लिंक डालेंगे ना तो वो लिंक्डइन डजंट लाइक लिंक्स. ये पता है ना एल्गोरिथम के बारे में.
तो आप सीधा जाके स्पॉटिफाई पे गो एंड सर्च फॉर फ्रीलांस 911 ऐसा सर्च कर लो, या तो हमारे नाम से भी सर्च कर लो, शायद एल्गो पकड़ ले, शायद नाम भी पकड़ ले, मैं श्योर नहीं हूँ, बट करके और फॉलो कर दो यार प्लीज, थोड़ा सा ये वो बूस्ट मिलता है, अच्छा नहीं हम कुछ तो काम कर रहे हैं। और So Shrishti has done a good job. She has posted the episode first on Spotify itself. मैंने डिले कर दिया है, मुझे YouTube पे पोस्ट करना था. I'm going to post it after this episode. So you can find it on YouTube and Spotify both. yeah. And you can search it by like you can search freelance 911 and इसी को येलो सा लोगो दिखेगा तुम्हें, अच्छा सा ब्राइट सा येलो कलर का. You can find it that way. अगर फिर भी नहीं मिले तो let us know. We'll send you links personally. Like we'll be हाँ मतलब more पर्सनल than डीएम्स happy पे to हम, do. अगर वो पर्सनल डीएम्स पे भी लिख देता है, हम पूरा लॉन्ग वीडियो भेज देंगे यार तुम्हें। True. We'll be happy to do it. We'll be more than happy to do it. yeah. So बाकी यार बताना, how are you liking these episodes, मतलब ऐसे पर्सनल डीएम्स में भी बता सकते हो कि आप like what, if you want us to include some more suggestions, something else, what are you liking, what are you not liking, ये सब थोड़ा बताना, YouTube comments में भी बता सकते हो वैसे, just so you know. Huh? Spotify also has that feature now. If Yeah, you've seen Spotify also has this feature. Where you can ask us questions or something. Yeah, you can text us you things. can comment or something. मतलब देख लेना. I think Spotify recently updated and there's this feature you can put something on the हाँ, there's podcast. this text feature that you can Yeah. request things and everything. तो वैसा सब है. तो yeah, that's pretty much it I think from our side. Yeah. And हर episode के साथ हमारा confidence बढ़ रहा है. I'm very proud Oh of yeah. that. True. Me too. या बस यही चीज है. ऐसे ही अगले साल भी हमारा ऐसे ही जाए सब कुछ. एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, इवन दो अभी 2 दिन है ऑलमोस्ट इस साल में बचे हुए, बट ठीक है, तुम लोगों से मिलने का काफी मौका मिलने वाला है फिर. तो या एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. 2024 में एक्चुअल रियलिस्टिक गोल सेट करो, जैसा कि हमने आज बात की है, और रियलाइज करो यार उन गोल्स को, और क्या रखा है जिंदगी में, बस यही सब बचा है और कुछ नहीं है, सब मुंह माया है बाकी. So that is my parting note. Chelsea, if you have to add something. I don't have anything. Spread the word, guys. But spread the word. Let's make this big, so that we can also we also have the budget to call famous people on the podcast and talk to them and put out reels that go viral. Let's spread the word. Yeah. हाँ मतलब जो भी है, ढेर सारा प्यार दीजिए आप इस पॉडकास्ट को, क्लीशे लाइन. Yeah. Wish you, wishing you a like a successful 2024. I don't know how many of you are freelancers. Like our title is Freelance 911, but yeah, freelancing is a journey of its own, I would say. And if you are someone who is deciding to pursue it again in 2024, so uh, first of all, definitely recommend following this podcast, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद तुम्हें पता ही नहीं होंगी फ्रीलांसिंग के बारे में, और नहीं भी तो बाकी सुनने में कोई टाइम वेस्ट तो होता नहीं है, सुनते रहोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है. Obviously, like you can do your stuff and just play our podcast on the Yeah, maid. and मतलब secondly, do it. It's not easy, certainly. Freelance is nothing that is easy. But I'm sure that you can crack it, because if we could do it, you can definitely do it. So on that parting note, very happy new year, and yeah, wishing you all the best. Happy New Year, folks. See you next week. See you next year. Yeah, अब अगले साल मिलेंगे हम लोग सब सारे.